गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लैंडफॉल ऑफ अ साइक्लोन। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 जून को जो है लैंडफॉल शुरू हो चुका है साइक्लोन बिपरजॉय का, और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो होने लग चुका है। तो लैंडफॉल क्या होता है? जब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है बेसिकली लैंड पर आता है। इसमें होता क्या है कि हम कब से कंसिडर करते हैं कि अब ये लैंड पर आ गया है? जब जो आई ऑफ द साइक्लोन होती है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे काम वेदर होता है जहाँ पर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द साइक्लोन, जब वो लैंड पर हिट कर जाता है तब हम कहते हैं कि लैंडफॉल हो चुका है साइक्लोन का। ठीक है। ये आई जो होती है साइक्लोन की, ये सर्कुलर भी हो सकती है, ओवल शेप भी हो सकती है, कई किलोमीटर की होती है, ये लगभग 50 किलोमीटर की भी हो सकती है। ठीक है। और ये एक काम वेदर यहाँ पर होता है। लेकिन जब इस ये आगे बढ़ता रहता है, जो पीछे का पार्ट होता है साइक्लोन का, वो डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। ठीक है। अब जो डैमेज होता है वो कितना होता है साइक्लोन से, ये डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड है उसकी, कितना बड़ा साइज़ है साइक्लोन का, कितने लंबे टाइम तक लैंडफॉल लास्ट करता है, कई बार कई घंटे तक रहता है। ठीक है। भाई ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा स्पीड है साइक्लोन की, जितना बड़ा साइज़ है स्टॉर्म का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। साइक्लोन जो बिपरजॉय है, उसका अगर हम देखें तो लैंडिंग का जो प्रोसेस है, ये जो लैंडफॉल हो रहा है, ये लगभग 5 से 6 घंटे का रहेगा। साइक्लोन जैसे ही लैंड पर आते हैं तो वो अपनी इंटेंसिटी को लूज़ करने लगते हैं, और जो मोस्ट डिवास्टेटिंग मोमेंट्स होते हैं साइक्लोन के, वो लैंडफॉल के टाइम पर ही होते हैं। ठीक है। अब अगर हम इंडिया में देखें तो मैनेजमेंट कैसे की जाती है साइक्लोन्स की, एनडीएमए ने जो है की कंपोनेंट्स बताते हैं कि पहले तो आपको वल्नरेबल एरियाज, पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू वार्निंग्स और एडवाइजरीज इशू करनी है, और साइक्लोन स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाकर जो है वो देते हैं, और साइक्लोन शेल्टर्स, इवैक्यूएशन राउट्स जो हैं एस्टैब्लिश किए जाते हैं। स्टॉक पाइलिंग की जाती है कि खाने पीने की सप्लाईज़, इमरजेंसी सप्लाईज़ जो है वो दी जाए लोगों को। फिर कोड्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, खासकर अगर साइक्लोन प्रोन एरियाज़ में तो है, उन वहाँ पर वो इशू किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस की जाती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जो है एटलीस्ट कम्युनिकेशन बना रहे। ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन की जाती है जितने भी एनजीओज़ के साथ, जो है आपके साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाते हैं, और इवैक्यूएशन करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टास्क होता है। जब साइक्लोन निकल जाता है, फिर उसके बाद पोस्ट साइक्लोन डैमेज असेसमेंट की जाती है, इमीडिएट रिलीफ जो चाहिए वो दिया जाता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस भी जो है वो फॉलो की जानी चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिया क्या स्टेप ले रहा है। इंडिया जो है वो वल्नरेबिलिटी जो है कोस्टल कम्युनिटीज़ के, उसको रिड्यूस करने के ऊपर फोकस है हमारा। कैपेसिटी बिल्डिंग करने के ऊपर फोकस है कि अगर ऐसी इवेंट्स आएँ तो हम कैसे जो है उसको डील करें। आईएमडी भी जो है कलर कोडेड देता है साइक्लोन्स की, अगर ग्रीन है तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर रेड हो जाता है तो जो है मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है, उसकी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कलर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वैभव स्कॉलरशिप स्कीम, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू फेलोशिप स्कीम लॉन्च की है, जो कि इंडियन स्टेम डायस्पोरा को जो है कनेक्ट करेगी इंडिया के साथ, इंडियन एकेडमिक्स और आर&डी इंस्टीट्यूशंस के साथ। ये उन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट को दी जाएंगी जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है। और उनको हर साल 2 महीने तक मैक्सिमम जो है वो इंडिया में बिताने को मिलेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ रिसर्च करने के लिए, और ये 3 साल तक मैक्सिमम अलाउ किया जाएगा। 4 लाख रुपए पर मंथ की ये स्कॉलरशिप है। रिसर्च इकोसिस्टम कंट्री में कैसे इंप्रूव किया जाए उसके लिए जो है ये वैभव स्कॉलरशिप जो है वो इशू की जा रही हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। 75 सच सिलेक्टेड जो फेलोज होंगे, उनको 18 आइडेंटिफाइड नॉलेज के वर्टिकल्स में काम करने को मिलेगा, जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी, हेल्थ, फार्मा एटसेट्रा। और इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, उन्होंने कहा है कि वो मेंबरशिप कंडीशंस जो हैं इंडिया के इंक्लूजन के, उसको जो है वो रिव्यू करेंगे, क्योंकि इंडिया ने जो है एसोसिएट मेंबर है, अभी आपको पता होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। तो आईईए है क्या? एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1974 में जो है फाउंड किया गया था ऑयल सप्लाईज़ की सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए, उस टाइम पर जो ऑयल क्राइसिस हुआ था। फिर इसमें 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 11 एसोसिएशन कंट्रीज़ हैं, और जो कैंडिडेट इसका मेंबर बनना चाहती है उसको कम से कम ओईसीडी का मेंबर होना ज़रूरी होता है। ठीक है। फिर इंडिया ने 2017 से इसको एज एन एसोसिएट मेंबर ज्वाइन किया हुआ है। अगर हम इसकी रिपोर्ट्स देखें तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स एटसेट्रा, ये सब रिपोर्ट्स ये पब्लिश करता है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनसेलेडस, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नासा के कैसीनी स्पेस क्राफ्ट ने फॉस्फोरस डिस्कवर किया है सैटर्न के मून एनसेलेडस पर। तो एनसेलेडस जो है वो सेकंड नियरेस्ट है मेजर रेगुलर मून्स ऑफ सैटर्न में, और ये एक एक्टिव मून है। यहाँ पर ग्लोबल ओशन ऑफ लिक्विड सॉल्टी वाटर है, और ये जो है मोस्ट रिफ्लेक्टिव बॉडी है हमारे पूरे सोलर सिस्टम की। कैसीनी स्पेस क्राफ्ट आपको याद होगा 1997 में नासा ने लॉन्च किया था, और ये 294 टाइम्स जो है वो ऑर्बिट कर चुका है अभी तक सैटर्न को 2004 और 2017 के बीच में। और एनसेलेडस और टाइटन दो इसके जो मून्स हैं वो इसी ने ही डिस्कवर किए थे, और ये ऐसी चीज़ें भी देख रहा है कि क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ वहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो फॉस्फोरस तो आपको पता है स्ट्रक्चर हमारे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल पार्ट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिब्लियोमेट्रिक्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कंट्री में जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो इशू किया जाता है, उस पर एक ये कंट्रोवर्सी हुई है कि उसमें जो है रिसर्च जर्नल्स कितने पब्लिश किए जा रहे हैं उसके ऊपर जो है वो एक फोकस रहता है। तो NIRF पहले देख लेते हैं हम। ओवरऑल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एटसेट्रा, इन सब कैटेगरी में हमारी रैंकिंग्स दी जाती हैं। और पैरामीटर्स कौन से होते हैं? ये 5 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वेटेज भी सामने लिखी गई है। तो बिब्लियोमेट्रिक्स क्या है? बिब्लियोमेट्रिक्स मतलब कि आपने कितने पेपर पब्लिश किए हैं, आपके इंस्टीट्यूट ने कितने पेपर पब्लिश किए हैं। जितने ज़्यादा होंगे तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा रैंकिंग में इफेक्ट होगा। ठीक है, तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या ये एक सही क्राइटेरिया है? क्योंकि बिब्लियोमेट्रिक्स जो है वो यह कैप्चर नहीं कर रहा है कि आपकी रिसर्च की क्वालिटी कैसी है, ये कैप्चर कर रहा है कि आपने नंबर ऑफ कितने जो है रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। अब इसमें दिक्कत ये भी है कि सिर्फ अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो कि रिसर्च आर्टिकल्स कितने पब्लिश किए हैं, तो उससे होगा क्या कि जो आपके रिसर्चर्स हैं वो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज़्यादा रिसर्च करेंगे जो ज़्यादा जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उतने पब्लिश नहीं होते हैं जर्नल्स में, चाहे जो, लेकिन वो नेशनल और लोकल इशूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर वो वर्क को जो है वो उठाना नहीं चाहेंगे रिसर्चर्स। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेमिनिड मीटियोर शावर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा के स्पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने न्यू जो है वो लाइट दी है ओरिजिन ऑफ जेमिनिड मीटियोर शावर के ऊपर। तो जेमिनिड मीटियोर शावर जो है वो पीक होता है मिड दिसंबर में, और ये मोस्ट रिलायबल एनुअल मीटियोर शावर है। ये जो है आपके 3200 फैथियन, ये इस एस्टेरॉइड से जो है ओरिजिनेट हुआ है। और एस्टेरॉइड्स जो हैं वो टिपिकली इन्फ्लुएंस होते हैं सन की हीट से। ठीक है, आई एम सॉरी, एस्टेरॉइड जो है वो टिपिकली इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं सन की हीट से, ऐसा न्यू फाइंडिंग्स में पता किया गया है। फैथियन एक एस्टेरॉइड है, लेकिन ये सन के बिल्कुल क्लोज ही पास होता है, और इसमें टेम्परेचर ड्रिवन एक्टिविटी भी होती है। और पार्कर डेटा ये भी कह रहा है कि हाई स्पीड कोलिजन, जिसको हम गैसियस एक्सप्लोजन भी कहते हैं, वो भी जो है जेमिनिड स्ट्रीम की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम देखें 3200 फैथियन, ये एक एस्टेरॉइड है, और इसको सबसे पहली बार एक सैटेलाइट के द्वारा जो है वो डिस्कवर किया गया था। और फैथियन मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में कहा जाता है कि सन ऑफ गॉड है, और क्योंकि ये सन के बहुत क्लोज है तो इसलिए इसको सन ऑफ गॉड माना जाता है। ब्लू इन कलर है। सन को ये लगभग 524 डेज में ऑर्बिट करता है। ऑर्बिट इसका हाईली एलिप्टिकल है, और ये अपनी रोटेशन को कंप्लीट करने में लगभग 3.5 घंटे के आसपास जो है वो लेता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बैंकॉक विजन 2030। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एज पर सेक्रेटरी ईस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बिम्स्टेक समिट जो है होने वाली है जो इस साल के एंड में, वो बैंकॉक विजन 2030 को अडॉप्ट करने वाली है। तो बैंकॉक विजन 2030 क्या है? प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक बाय 2030 लाने का इसमें जो है मिशन है। एक क्लियर डिस्टिंक्शन और प्रायोरिटीज सेट करेगा बिम्स्टेक की तरह, बिम्स्टेक के एज अ गोल। ठीक है, तो अभी तक जो हमारी कोई क्लियर प्रायोरिटीज़ नहीं है बिम्स्टेक से रिलेटेड कि क्या होना चाहिए, इसका विजन कैसे हम आगे मूव फॉरवर्ड करें, तो इसके लिए जो है ये विजन को अडॉप्ट करने का जो है सोचा गया है। बिम्स्टेक तो आपको पता ही होगा कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में इसको बनाया गया है। मेंबर कंट्रीज इसके बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल हैं। इसका सेक्रेटरीट जो है ढाका में लोकेटेड है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एग्जिम बैंक, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एमडी जो है एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने बोला कि इंडिया जो अपने फ्यूचर लाइन ऑफ क्रेडिट देगा अफ्रीका को, वो मेजर फोकस रखेगा
डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर, ठीक है। तो एग्जिम बैंक आपको पता है प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, और ये एस्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अंदर। होली ओन्ड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा है, और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, लाइंस ऑफ क्रेडिट देता है ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और ये इसके जो ऑपरेशंस हैं बैंक के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गवर्न होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है चेयरमैन भी आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी आते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्री सेट बोरोइंग लिमिट है, जिसमें जो है बोरोअर्स को हम कहते हैं कि आप इतना हमसे बोरो कर सकते हो, तो एक तरह से इसको हम लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ नेचुरल आर्क। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम ने डिस्कवर किया है इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क। अभी एक सर्वे हुआ है कोल का केंदुआ धीही ब्लॉक में, उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो यहाँ की जो स्टेट यूनिट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उन्होंने कहा है कि इसको नेचुरल आर्क को जो है वो हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये हमारे बिगेस्ट नेचुरल आर्क है कंट्री का, जिसको अगर हम करेंगे तो जियो हेरिटेज साइट बनेगा, ठीक है। तो सुंदरगढ़ के अलावा भी ऑफकोर्स आपको पता है तिरुमला हिल्स जो है तिरुपति में, और एक अंडमान निकोबार, ये दोनों ही जो है ये भी हमारे नेचुरल आर्क्स हैं। तो इंडिया की जो बिगेस्ट नेचुरल आर्क जो हमें मिली है, सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क, ये फेरोजिनस सैंडस्टोन वाले एरिया में, जो अपर कामथी फॉर्मेशंस जो हैं आपके उड़ीसा में, वहाँ पर ये हमको मिली है, जो कि मिडल जोरासिक एज के आसपास का टाइम पीरियड पे बनी थी। ओवल शेप्ड आर्क है ये। इसकी मैक्सिमम हाइट और विड्थ जो है वो 7 मीटर और 15 मीटर के आसपास है। कई तरह के सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, और फॉल्ट एक्टिविटीज़ से कहा जा रहा है कि ये बना था। इसका जो है और ये इसका जो नेचर है वो लिथोटाइप का है। जियो हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? रेयर और यूनिक साइट्स, जो कि जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो नेसेसरी मेजर्स लें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को जो है US से एक्वायर करने का। तो ये ड्रोन जो है MK-9 रीपर से जो है का ही वेरिएंट है। हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स हैं, जिनको कि स्ट्राइक मिसाइल्स के साथ आर्म किया गया है, और जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसके 2 वेरिएंट है, स्काई गार्डियन और दूसरा है सी गार्डियन। अगर हम सी गार्डियन के जो है फीचर्स देखें, जो ऑफ कोर्स प्रोक्योर किया जाने वाला है सी गार्डियन वेरिएंट हम इंडिया द्वारा, वो 5670 kg का जो है वेट उठा सकता है। इसकी 2721 kg की फ्यूल कैपेसिटी है। 40 घंटे तक इसकी जो है इसको चलाया जा सकता है, और ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए भी ये केपेबल है, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is landfall of a cyclone. This topic is important for your environment section and geography section also. So on June 15th, a landfall process of cyclone Biparjoy has started near Jakhau port, in the state of Gujarat, in Kutch district, and this continued till midnight. And what is landfall? Landfall is an event of when tropical cyclone comes onto the land. And when do we consider that the landfall has been made? So when the eye of the storm or the eye of the cyclone reaches the land, we consider that the landfall has been done. So what is the eye? Eye is the relatively calm weather in the cyclone, and it is the center of the storm. It is a circular or oval shaped area, and the size of this eye can vary from a few kilometers to over 50 kilometers in diameter. And this landfall marks the moment when the cyclone officially reaches the land. Okay, so what is the damage that is caused by a cyclone's landfall? It depends upon, of course, the severity of that cyclone, the speed of the wind, and the size of the storm system, and it can last for a few hours. Okay, so for example, cyclone Biparjoy's land process is expected to be about 5 to 6 hours, and cyclones will lose their intensity once they move over land. Okay, so landfalls are often very devastating moments of cyclones, and they also mark the beginning of its end. So what is how India is managing the cyclones? How do we generally manage the cyclone? So national disaster, as per National Disaster Management Authority in India, several key components are
part of the management of cyclones. First of all, of course, you have to identify the vulnerable areas, populations, and infrastructure, and then you develop robust early warning systems, and warnings and advisories are issued. Then you have to, of course, update the cyclone specific disaster management plans, identify and establish cyclone shelters, evacuation routes, stockpile the emergency supplies like food, water, etc. Then, of course, for mitigation measures, we have developed building codes and regulations, infrastructure in terms of infrastructure development, regular maintenance and strengthening of critical infrastructure is also required. In terms of our response when the cyclone or the disaster occurs, then we have to coordinate with various stakeholders and establish emergency operation centers and coordination cells. And as part of evacuation, of course, cyclone shelters are made after the cyclone or the disaster has happened. Then post cyclone damage assessments are made, immediate relief assistance is given, medium and long term rehabilitation and reconstruction plans are made in place, and all should happen within the sustainable development practices. So India has a national cyclone risk mitigation project also to reduce the vulnerability of coastal communities, and the focus is on capacity development. Okay, so IMD also issues 4 colors depending upon the severity of the cyclone. Okay, green, yellow, orange, and red. Red being the most devastating or the most severe form of cyclone. Okay, so the next topic is Vaibhav Scholarship Scheme. This topic is important for your science and tech section. So Government of India has recently launched a new fellowship program to connect Indian STEM diaspora with Indian academic and R&D institutions. So these fellowship program scholarships would be awarded to outstanding scientists and technologists of Indian origin, and they may spend up to 2 months in a year for a maximum of 3 years. They will be given an amount of 4 lakh rupees per month to improve the research, and the aim is to improve the research ecosystem in India's higher educational institutions. So 75 selected fellows would be invited to work in 18 identified knowledge verticals, and this entire scheme would be implemented by the Department of Science and Technology. Okay, so the next topic is International Energy Agency. This topic is important for your international relations. Recently, Executive Director of the International Energy Agency would review all its membership conditions for the inclusion of India in the IEA. So IEA, you know that India is a member of associate member rather of IEA since 2017. Anyways, IEA is an autonomous intergovernmental organization which was founded in 1974 to ensure security of oil supplies. It consists of 31 member countries and 11 association countries, and a candidate which wants to be a member of IEA should be a member country of OECD. Okay. So, like I've told you, India is a associate member of IEA since 2017. And the next topic is Enceladus. This topic is important for your science and tech section. Recently, NASA's Cassini spacecraft has discovered phosphorus on Saturn's moon Enceladus. It is the second nearest, Enceladus is the second nearest object or the second nearest moon of Saturn. And it is an active moon which hides a global ocean of liquid salty water beneath its crust. And it is the most reflective body in the solar system. The Cassini spacecraft was launched in 1997, and it has been orbiting between Saturn since 2004 to 2017, and it has circled the planet about 294 times. So this has also revealed that Enceladus and Titan are promising locations to search for extraterrestrial life. So about phosphorus, you know that it is a fundamental unit of structure of DNA and RNA both, and it is a vital part of our cell membranes. So the next topic is bibliometrics. This topic is important for your governance section. So in a country as diverse as India, ranking our universities just because and giving unnecessary focus on bibliometrics would not be a wise choice in a national institutional ranking framework as per some experts. So anyways, what is NIRF? So it categorizes or it releases ranking across various categories like overall category, research institutions, universities, colleges, and it NIRF is launched in NIRF considers 5 parameters, and the weightage of them are also given here. Okay, but anyways, let's come to the main topic. What is bibliometry?
bibliometrics and why it is controversial. So bibliometric means that you are considering that how many research papers have been published by the researchers of this particular institution in the journals, and based upon that you are giving them a certain weightage. Okay, so it is a tool for assessing research output, but the experts are saying that if you give unnecessary or rather over reliance on bibliometrics, then you are encouraging researchers to focus on only that work which is likelier to be published in journals. But this would deprivilege the work which is focusing on real national and more local issues, because they may not be published in the research journals of international origin, especially like the science journal. So this is not a good criteria to focus on bibliometrics and give it more weightage. Okay. So the next topic is Geminid meteor shower. This topic is important for your science and tech section. So as per NASA's Parker Solar Probe mission, it has shed new light on the origin of intense Geminid meteor shower. So Geminid meteor shower peaks around mid-December, and it is the most reliable annual meteor shower. And unlike most meteor showers, it originates from comets, and which originate from comets. Geminid stream appears from an asteroid known as 3200 Phaethon. So 3200, as per the new findings, asteroids are not typically influenced by the sun's heat, and they should not leave behind a trail. Phaethon is an asteroid, but it flies by the sun, and Parker data also indicates that a powerful event like a high-speed collision or a gaseous explosion is likely caused by the creation of the Geminid stream. So what is 3200 Phaethon? It is classified as an asteroid, and it was the first to be discovered via satellite. And according to the Greek myth, it is the son of the god Helios, and due to its close approach to sun, it is known as the son of god. It is blue in color, and it orbits the sun every 524 days, and its orbit is highly elliptical, and it completes a rotation on its axis every 3.6 hours. So the next topic is Bangkok Vision 2030. So this topic is important for your international relations. So as per Secretary East in the Ministry of External Affairs, the BIMSTEC summit at the end of this year will adopt a Bangkok Vision 2030. So this summit is basically aiming to build a prosperous, resilient and open BIMSTEC by 2030, and it will give a clear direction and priorities to the BIMSTEC. Okay, so what is BIMSTEC? BIMSTEC was launched in 1997 and with the signing of Bangkok Declaration, and its secretariat of course is established in Dhaka, that is in Bangladesh. So the next topic is Exim Bank. This topic is important for your economy section. MD of Exim Bank of India has recently said that India's future lines of credit to Africa would now focus on defense exports to meet the requirements of the continent. So Exim Bank is premier export finance institution of the country. It was established by the Government of India under the Exim Act of 1981. It is wholly owned by the Government of India, and it provides financial assistance to exporters and importers, and it also extends lines of credit to overseas financial institutions. So the operations of the bank are governed by board of directors, and the board of directors consists of a chairman, managing director, two deputy managing directors, etc. And what is a line of credit? Basically, you are giving a preset borrowing limit so that the borrower is told that you can borrow from us up to this amount. Of course, it can also be increased in case of an open line of credit. Okay. So the next topic is India's natural arc. This topic is important for your environment section. So as per the team of a Geological Survey of India, and they have discovered India's biggest natural arc during the survey of coal in Kendwa Dihi block of Odisha's Sundargarh district. So the State Unit of Geological Survey of India has proposed to declare the natural arc in the Kanika range of Sundargarh Forest Division as a geoheritage site, and this will be the biggest natural arc of the country to have a geoheritage tag as of now. So what is this India's biggest natural arc? It is located it is also called the Sundargarh Natural Arc, and it is present in the ferruginous sandstone of the Upper Kamthi formations, which date about 184 to 160 million years. This is an oval shaped arc, and it has a maximum height and width of about 7 meters to 15 meters respectively, and it is surrounded by a storehouse of different primary sedimentary structures. So formation of this arc could be due to fault activities and the nature of lithotype. So what are these geoheritage sites? So these sites are of rare and unique origin, and they are declared by Geological Survey of India, but the
responsibility to protect these sites falls on the respective state governments. So the next topic is MQ-9B Predator drone. This topic is important for your security section. So Defense Ministry has recently accorded approval to procure 30 MQ-9B Predator drones from the US and to crank up surveillance apparatus of the armed forces. So MQ-9B Predator drone, the Sea Guard variant, would be procured by India, and these are basically high altitude long endurance drones armed with strike missiles. They have been developed by General Atomics Aeronautical Systems. So it has two variants, Sky Guardian and its sibling Sea Guardian, and it can carry up to 5-6. The one that is India is procuring, it would be able to carry up to 5670 kg, and it has a fuel capacity of 2721 kg of fuel. It has a maximum endurance of 40 hours, and it is also capable of automatic takeoffs and landings. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.